Assalamualaikum everyone. So आज की जो वीडियो है that is a first for me honestly. Today I'm going to create this very pretty glowy makeup look with you all and I'm hopeful that it's going to be helpful and without any further ado let's begin. I've already prepped my skin. मैंने aloe vera gel के अंदर tea tree oil को mix करके apply कर लिया था because my skin is uber oily and sensitive. So now we're going to start with the primer. तो मैं Porefessional apply करूँगी. This is my choice of primer. तो मैं focus उन्हीं जगहों पे कर रही हूँ जहाँ पर मेरे unevenness है या blemishes hain. I'm just focusing on those areas. I don't mind imperfections on my skin because it is something that I think कि अगर आप खुद बहुत ज़्यादा conscious हो जाते हैं ना then दूसरे लोग हो नहीं भी ना तब भी you're going to feel like oh my god this person is talking to me so this person is probably looking at my imperfections and all of that. I mean if you literally judge people on the basis of how they look and all the time, then it's not right. This is Fix It Makeup Setting Spray, but I use it as a primer as well. We're just going to do it. So while my setting spray is actually setting on my skin, I will apply some lip balm. Before I forget, I will actually put some tissue paper right over here. Do like this. Yeah, this is much better. Crisp लगता है सब कुछ. So मैं हमेशा से जो है ना start करती हूँ एक body mist से and then I just like to go in with my perfume of choice. Most of the time I don't use a perfume. I just use a body spray version of any perfume that I love. So this is the one that I love and it's no secret to anyone. So we're just going to apply very less actually. So for foundation, I'll be mixing these two. I'll be using a stippling brush. Personally, मुझे feel होता है कि stippling brush works better. इन दोनों foundations की जो coverage है, it's very natural and airy. और इसके अंदर थोड़ा आपको it's like a natural glow that you feel. So you can see कि मैंने इसको पूरा भी नहीं किया है and I'm done with my face and neck. Try थोड़ा सा इस तरह से इधर लगा लूँ उससे ये होता है कि एक evenness आ जाती है. Now we're going to go on to the concealer and I actually got a new concealer that I'm very excited to see how it works on my skin and I'm excited to show you guys as well. This is the L'Oreal Infallible concealer और मुझे जो shade recommend किया गया था वो Cashew था. So I am applying right on the inner corners just because I feel that this brightens up your eyes a lot और ये correct भी करता है at the same time. So yeah. And then of course हम थोड़े से end पर भी apply करेंगे. I like to use a beauty blender but मेरा जो beauty blender होता है I do not wet my beauty blender at all. That's just something that is like a personal preference again. I feel कि मेरे लिए अगर मैं इसको wet करती हूँ so I sweat more और मेरा जो makeup है ना it doesn't really stay. Can you see the difference you guys? So now you guys I will be highlighting my under eyes and this is the one that I like to use. So now I will take the concealer on top of my lid और मैं अपने lids को जो है वो conceal करूँगी lightly. So first I'm going to apply powder which is Coty Airspun का neutral powder. That's what I like to use. Now you can use a beauty blender as well. So I've taken the product and उसके बाद I am doing like this और फिर मैं इसको dust off कर रही हूँ. So you don't want a lot of product. अगर product ज़्यादा आ गया तो आप इसको इस तरह से कर लें ताकि it should not cake up. अगर product ज़्यादा हो गया तो don't start on the under eye directly.
नीचे से शुरू करेगा। अब मैं जहाँ पे मुझे फील होता है कि हाँ यहाँ पे स्वेट होता है, तो वहाँ पे हल्का हल्का आई एम गोइंग टू अप्लाई द पाउडर। स्पेशली अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर ना आपको काफ़ी प्रोडक्ट मिल जाता है, सो इट्स लाइक ईजी फॉर यू टू डू इट। पीपल कैन सी मैंने अपने ब्लेमिशेस को कंसील नहीं किया है। यू डू नॉट नीड टू कंसील ऑल द टाइम, समटाइम्स लेट योर स्किन बी। सो हाथ रखकर आई विल डू द स्प्रे थिंग। And now I can take this tissue off. We're going to start with the eyebrows first. This is from Luscious और ये इनकी Brow Luxe Toolkit है. So yeah, so this is how it looks, you guys. And आपको यहाँ पर एक compartment भी मिलता है जहाँ पर you have things. But ये बहुत ही flimsy सी palette है. Honestly speaking, it's not worth the money. That's what I feel. But we're going to use the I think it's the gel. It's a very simple thing, you guys. It's like a jugaru thing, but I think it's very very effective. So you start from not right जहाँ पर आपकी eyebrow शुरू होती है, थोड़ी सी पीछे से आप शुरू करके lift your eyebrows and so आगे से मैं straight lift कर रही हूँ and यहाँ से मैं थोड़ा सा sideways lift कर रही हूँ. That's what I do. Just kind of go in with this. एंड अगेन मैं इसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स के अंदर कर रही हूँ. सो या once you are done and you feel कि कोई ऐसा spot है जहाँ पर you need to add more definition, so take the small brush and go on that spot only. Lightly dust it off so that कोई भी प्रोडक्ट ना रहे आपके फेस के ऊपर. मैंने थोड़ा सा आई को जो है वो स्टिकी रखा था, मैंने कंसीलर लगाया था. आई डिड नॉट पाउडर इट एज सच बिकॉज समटाइम्स क्या होता है आपके जो कलर्स हैं वो शो अप नहीं होते. एंड दिस इज़ अ वेरी निफ्टी ट्रिक जो कि आप ट्राई कर सकते हैं if your colors don't show up. So we are going to use this palette, you guys, and I love this palette. It's Be Your Selfie by Pure. Look at the colors. ये बहुत प्यारे colors हैं. So we are going to use the browns over here. Brown इस्तेमाल करेंगे, peach इस्तेमाल करेंगे. So let's begin. I'm excited. Let's just get into it. You need a brush जो कि इस तरह से हो. So we're going to pick the shade Natural जो कि इनका brown सा shade है and dip it in and dust it off. So first मैं अपने crease के ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा and you can see I'm trying to deposit the product right over here and in a circular motion I'm just going halfway in. मैं पूरा अंदर नहीं अभी लेके जा रही हूँ आपको ये मोशन जब आप कर रहे हैं so you're going to come over here and flick it out just like that, थोड़ा सा कलर को बाहर की तरफ करें. Now I'm connecting it with my lash line. ये lash line मतलब मैं इसको कनेक्ट करें जैसे हम अपना eyeliner ड्रॉ करते हैं exactly like that. But my pressure is very light. You can see मैंने बहुत पीछे से पकड़ा हुआ है अपने ब्रश को. This brush is dirty. अगर आपके पास टिश्यू है तो what you can do is कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं इसको. अब मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगी and I'm going to use the shade Peach, but literally barely मैं कर रही हूँ and I just want to blend this area right over here. I'm going to use the shade Free over here and Natural. Free के अंदर जो है वो ग्रे टोन है and Natural के अंदर रेड टोन है, so it's like a bronzer and contour shade. जहाँ पे मेरी बोन है, not where मेरे ये बन रहा है ये नहीं, जहाँ पे मेरी बोन है exactly there I will literally do this. अब इसको हम turn करके we are just going to blend it.
I want to have some dimension on the outer corner. तो मैं वहाँ पर सिर्फ मैंने फ्री लिया जो कि डार्क कलर है हमारा ब्राउन, and I'm going to apply it right over here. क्रीम आई शेडोज बहुत आए हैं मार्केट में, तो मेरे पास कीको का है. दिस इज इन द नंबर 28. ऑनेस्टली दिस इज रियली नाइस. इसके बेस के लिए मैं पीच शेड यूज करूँगी. सो आई एम यूजिंग दिस ब्रश. ये एक फ्लैट ब्रश है और मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रही हूँ इसके ऊपर. आई एम डस्टिंग इट नाउ लाइटली. मैं इसको लगा रही हूँ अपने आई के इनर पार्ट पर. तो यू कैन लिटरली पिक इट अप ऑन योर फिंगर एंड apply it. Like this is how I like to do it because then I have more control. And then I'm just applying it. Also, I am applying a little bit on the brow bone as well. I will take the shade Natural and I'm going to apply this on my lower lash line. So this is a pencil brush that I'm using. It's like a smudger brush. And now you guys, we're going to take this brush और ये exact blend जो कि हमने अपने outer week के लिए इस्तेमाल किया था, इसको मैंने clean कर लिया है. And I'm going to use this shade Peach और मैं थोड़ा सा blend करूँगी ताकि it doesn't look too harsh. So जहाँ पर आपका brown shade end हो रहा होता है वहाँ पर आप इसको हल्का हल्का very lightly you're going to take it all the way in. अपने inner कॉर्नर की तरफ आप लेकर जाएंगे. I will pick my highlighter and take a brush like this और इसके ऊपर करके we are going to highlight the inner corners. Exactly जहाँ पर आपकी eyeball है ना, जब आप अपनी आँख बंद करते हैं वहाँ पर apply this. To line my eyes, I have picked a brown shade जो कि brownish black सा shade है. इस palette के अंदर है तो I'm using this only. So I'm following my lashes, my lash line जहाँ पर मेरे end हो रही ना उसी को मैं follow कर रही हूँ. And I'm applying this. And now taking this brush, इसके ऊपर if you remember तो मैंने peach shade लगाया था तो वो अभी भी यहाँ पर होगा and उससे मैं lightly blend कर रही हूँ. But I'm not trying to spread the product. I'm using this Luscious white eye pencil on my waterline. ये Colossal Kajal है Maybelline का. So the kind of look that I'm creating right now, I think कि उसमें अगर मैं अपनी lashes को curl करूँगी, it will not look wow the way it looks without curled eyelashes. This is Blingorama by NH. For the face, you guys, I'll be using the Too Faced bronzer and I'm in the shade medium. Before I bronze, I will be dusting my face right now. To bronze my face, I'll use this brush. ये बहुत ही simple basic सा brush है, but I personally love it. You can actually customize it yourself. I pick the product up and मैं lightly dust करती हूँ because I want to deposit the bronzer shade. So I'm going to tap it first. If you want a youthful look, right where your eyeball is middle, वहाँ तक लेकर आए उसको. That's literally what you need. So once आपका सारा product हो गया है, then you can apply it like this. So I'm using Essence Silky Touch blush and Essence के blushes मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. This is in Babydoll 20. So I'm using a stippling brush. You can use a normal brush as well. तो what I like to do कि मैं इस तरह से कर लेती हूँ and then I just go onto the apples of my cheeks जहाँ पे मुझे concentration चाहिए. Taking the same brush and उसको मैं थोड़ा सा lightly dust कर रही हूँ, like I'm trying to sweep it backwards. This is literally what I do and I'm thinking कि मैं अपनी थोड़ी सी nose पर लगा लूँ powder को
एंड आई फील कि मुझे फोरहेड अपना शाइनी नहीं चाहिए, सो या a little bit over here as well. अंडर आइज को मैं टच नहीं करूँगी. I will take a fan brush. This I feel applies the product very, subtly, and that's what I love. And that's like very sweet. So अपने brow की ना corner पे भी मैंने इसको थोड़ा थोड़ा apply किया है. Take a little bit on this finger. And इसको भी थोड़ा सा dust कर लें, like it should not be too harsh. And apply it on one of your eyebrow. So when the light hits, so it just looks कि वो naturally आपका इधर highlight हो रहा है. You need a lip tint and a lip gloss of your choice. So this is the final look. I hope you guys liked it. It's a very simple look. ये आप किसी की शादी में भी कर सकते हैं. In fact, you can do it on Eids as well. I've added these jhumkas to show you कि आप Eastern wear के साथ भी carry कर सकते हैं and something that is modern तो उसके साथ भी अच्छा लगेगा. I'll see you all in my next one. Take care. God bless you all and remember that your family is just the way you are. Rab rakha guys and girls. Bye. Bye.